Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the exercise of our chapter number 6. So let's start. So dear students, first of all, fill in the blanks. Question number 1, that is fill in the blanks. The first blank is a bacterial arrangement in packets of 8 cells is described as, that is Sarcina. Blank number 2, the shape and arrangement of dash is diplococci. So dear students, the shape and arrangement of Diplococcus pneumoniae, जो bacteria है Diplococcus pneumoniae, which is responsible for pneumonia and blood poisoning in animals, that is Diplococci. Number 3, pili are tubular shafts in bacteria that serves as a means of conjugation and attachment in some bacteria. Blank number 4, dash are unusual type of bacteria that live in extreme habitats. So that are the archaeobacteria. Blank number 5, dash is a bacterium that is photosynthetic. तो हमने photosynthetic bacteria की बहुत सारी examples पढ़ी, जैसे किसी एक को आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, like green sulfur bacteria, clear? So that is a photosynthetic bacteria. Blank number 6, dash is a cyanobacterium. So that nostoc, that is a cyanobacterium. Now, blank number 7, dash are called as bloom-forming organisms. So blue-green algae or cyanobacteria, they are called as the bloom-forming organisms. Blank number 8, use of antibiotics is one of the means of controlling infectious diseases. Clear? Infectious diseases, especially due to bacteria. Question number 2, each question has 4 options. Encircle the correct answer. The first MCQ is, which of the following is not found in all bacterial cells? तो आपको याद होगा, ये मैंने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में ये MCQ मार्क करवाया था आपको वहाँ पर भी, कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, एवरी बैक्टीरिया. यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है. ऑप्शन अल्फ़ा इज़ सेल मेम्ब्रेन, वो तो तमाम बैक्टीरिया में होती है. ऑप्शन बीटा इज़ राइबोसोम्स, वो भी तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं. ऑप्शन चार्ली इज़ न्यूक्लियोइड, वो भी तमाम ऑर्गेनिज्म तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हैं. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ डेल्टा. इट सेज कैप्सूल. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हर एक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होता. MCQ number 2, the major locomotory structures in bacteria are. So hopefully आपको आंसर पता चल गया होगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डिटेल से. अल्फा ऑप्शन इज फ्लैजिला, बीटा ऑप्शन इज फिम्ब्रियाई, चार्ली ऑप्शन इज पिलाई, and delta option is cilia. So obviously the flagella, option alpha. Blank MCQ number 3, which of the following is a primary bacterial cell wall function? तो bacterial cell wall function, primary function क्या है इसका? Alpha option is transport, no. Beta option is support, yes, that is the answer. Charlie option is motility, and delta option is adhesion. So the primary bacterial cell wall function is support. Now MCQ number 4, it says, which of the following is present in both gram-negative and gram-positive cell walls? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से देखना है कि gram-positive cell wall और gram-negative cell wall में से कौन सी चीज़ कॉमन है. Alpha option is an outer membrane, beta option is peptidoglycan, Charlie option is teichoic acid, and delta option is lipopolysaccharides. So dear students, आपको पता है कि outer membrane, it is not present in both, and teichoic acid is not present in both. Lipopolysaccharides, they are also not present in both. So peptidoglycan is common in them. So the correct answer is beta option. Now MCQ number 5, mesosomes are internal extensions of the alpha option cell wall, beta option cell membrane, Charlie option chromatin body, and delta option capsule. So definitely you know
So the mesosomes, they are the internal extensions of cell membrane. So option beta is correct. MCQ number 6, bacterial endospores function in. तो bacterial endospores, spores की हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, एंडोस्पोर एंड एक्टोस्पोर. तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया को जो एंडोस्पोर्स हैं ये क्या हेल्प देती हैं. सो व्हाट इज़ देयर फंक्शन? अल्फा ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन, बीटा ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, चार्ली ऑप्शन इज सर्वाइवल एंड डेल्टा ऑप्शन इज स्टोरेज. सो करेक्ट आंसर इज चार्ली, दैट इज सर्वाइवल. सो अनफेवरेबल कंडीशंस में the endospore forming bacteria, they form the spore, and that is required for the survival. Now the short questions. The first short question is, name general characteristics that could be used to define the prokaryotes. तो dear students, ये आप previous classes से पढ़ते आ रहे हैं, junior classes में भी पढ़ा आपने, 9th-10th में भी पढ़ा, और मैंने भी अच्छे से आपको इस चैप्टर में पढ़ाया कि प्रोकैरियोट्स की कौन सी खसूसियात होती हैं. मतलब they do not have nucleus, and the cell wall is made up of peptidoglycan or murine and cellulose, etc., etc. So these are the unique characteristics. And part B of question number 1 is, do any other microbial group besides bacteria have prokaryotic cells? So definitely we have studied 2 different organisms, bacteria and cyanobacteria. So besides bacteria, and the other group which have prokaryotic cells are the cyanobacteria. And the part C of first short question is, in what habitats are bacteria found? Give some general means by which bacteria derive nutrients. तो dear students, आपको पता है बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद हैं. वो ग्लेशियर्स में मौजूद हैं, वो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मौजूद हैं, वो सॉइल के अंदर मौजूद हैं, वो एयर के अंदर मौजूद हैं. They are also present in our digestive system, on the skin as a normal flora. Clear? So everywhere they are present, and there are 2 common general means of nutrition in bacteria, autotrophic and heterotrophic. Now question number 2, list functions that cell membrane performs in bacteria. तो उसका part A है short question number 2 का, कि वो कौन से functions है जो बैक्टीरिया की सेल जो मेम्ब्रेन है वो परफॉर्म करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो सेल मेम्ब्रेन का जनरलाइज्ड फंक्शन जो कि तमाम सेल्स में होता है, रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड कंटेन्स एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, व्हाट आर मेसोसोम्स एंड सम राइट सम ऑफ देयर पॉसिबल फंक्शंस. तो डियर स्टूडेंट, डिटेल से पढ़ाया था आपको. Mesosomes, they are the internal extensions of cell membrane, and they are involved, they have the enzymes for respiration, DNA replication, and cell division. Question number 3, what is unique about the structure of bacterial ribosomes? So dear students, हम पढ़ चुके हैं, they are smaller than the eukaryotic ribosomes. They are 70s, while the eukaryotic ribosomes, they are 80s. Question number 4, draw the 3 bacterial shapes. तो 3 bacterial shapes, जो spherical, they are cocci, and the rod shaped, they are bacilli, and the spiral, means the spirochetes and the spirillum, and the vibrio, the comma shaped. Name a bacterium that has no cell wall. तो dear students, एक ही ऐसा बैक्टीरिया है, एक ही एक्सेप्शन है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, and that is mycoplasmas. Question number 6. A gram stain discharged from an abscess shows cocci in irregular grape-like clusters. What is the most likely genus of this bacterium? तो dear students, एक abscess है, एक wound है, यानी कि जख्म, उसकी ग्राम स्टेनिंग की गई, तो पता चला उसके अंदर cocci हैं और उनकी अरेंजमेंट किस तरह से थी, irregular grape-like. तो ये इसमें कौन सी जीनस है dear students? So that is staphylococci. आपको याद होगा कि irregular जो शेप्स होती हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, that will be most probably staphylococci. Now question number 7, draw an outline and label streptobacilli, diplobacilli, and staphylococci. So dear students, streptobacilli and diplococci and staphylococci ये हम डिटेल से कर भी चुके हैं और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे.
So this is how we draw and outline and label them. Question number 8. You observe a culture of predominantly round, presumably spherical bacteria that, though apparently fully divide, nevertheless have failed to separate, thus resulting in long chains of cells. What generally might you call such an arrangement? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक सिचुएशन बताई जा रही है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक कल्चर, और उसमें प्रीडोमिनेंटली कौन सा बैक्टीरिया राउंड शेप्ड यानी कि स्फेरिकल. तो स्फेरिकल बैक्टीरिया कौन से होते हैं? कोकाई. तो पहली बात तो यहीं पे क्लियर हो गई. डैट ऑल्दो अपेरेंटली फुल्ली डिवाइड, वो डिवाइड तो कर रहे हैं, नेवरदलेस हैव फेल्ड टू सेपरेट, लेकिन वो आपस में अलहदा नहीं हो पा रहे, दस रिजल्टिंग इन लॉन्ग चेन्स ऑफ सेल्स. तो डिवाइड करते करते उन्होंने लॉन्ग चेन्स बना ली. सो व्हाट जनरली माइट यू कॉल सच एन अरेंजमेंट? तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? तो जुड़े हुए हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, लॉन्ग चेन्स बनते जा रहे हैं, सो स्फेरिकल है. सो यस, यू आर राइट, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई. सो स्ट्रेप्टोकोकाई, अ चेन ऑफ कोकाई is there, joined end to end with each other. Now, question number 9. Match the following description with best answer. So, option A is the first one is column 1 is, हम इसमें 3 columns बनाएंगे, clear, और उनमें इसको तरतीब से लिखते जाएंगे. ये जितने भी हमें वो दी गई हैं A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है, यहाँ तक, और इनके हम कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम में इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, इन जो हमें यहाँ पर डाटा गिवन है, और जो सेकंड कॉलम है उसमें हम उसके सामने जो दिए गए हैं, ए के सामने ए, बी के सामने बी, ये सेकंड कॉलम, और एक तीसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें हम इसका करेक्ट आंसर देंगे. सो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट ए है, डिवीजन इन वन प्लेन, कोकाई अरेंज्ड इन पेयर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, जो करेक्ट मैच है इसका, दैट इज डिप्लोकोकस. तो पेयर में होंगे और कोकाई होंगे तो डिप्लोकोकस. बी, डिवीजन इन वन प्लेन, कोकाई अरेंज्ड इन चेन्स. तो द आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस. क्लियर? स्ट्रेप्टोकोकस. सी, डिवीजन इन टू प्लेन्स, कोकाई अरेंज्ड इन स्क्वायर ऑफ 4. तो स्क्वायर ऑफ 4, dear students, that is tetrad. You know very well. Option now the D part is of this question number 9. Division in one plane, rods completely separate after division. तो जब डिवीजन के बाद मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो गए, एक ही रह गया, रॉड है तो रॉड को एक ही होगा, तो क्या होगा? बैसिलस. करेक्ट आंसर इज बैसिलस. ई, डिवीजन इन वन प्लेन, रॉड्स अरेंज्ड इन चेन. तो चेन में डियर स्टूडेंट्स एक किया, स्ट्रेप्टोबैसिलस. चेन का मतलब स्ट्रेप्टोबैसिलस. नेक्स्ट इज a comma shaped, F is a comma shaped bacterium. तो comma shaped bacterium dear students हमने पढ़ा था, that is Vibrio, clear? And G is a thin, flexible spiral. So they are the spirochetes, you know very well. And a thick, a rigid, that is spirillum. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.